Good morning, dear students. This video is for the students of Health Education, Punjab School Education Board +1 class. And this is the first video in English medium. I have already made videos on first chapter in Punjabi medium. First chapter, let's do in English. Name of the chapter is Health Education. Health is related to our well-being and education is related to study of that well-being, physical well-being. It is health. Right? So, in this chapter we will do definition of health, kinds of health, objectives of health, principles of health, health-related measures, scope of health. Along with this, we will do question answers also. Introduction. What is health? First, you should know what is health. Health is the basic human right in man's natural condition. Basic human rights. Health is basic human rights in man's natural condition. It means living according to the nature, okay, and should have good environment, physical well-being, right, good condition of mind. So if a person is to grow physically and mentally, he should have good environment, he should have good diet, he should have relaxed mind. So for that, it is very important that we should be aware of what health is and how we can take care of it. Sometimes people think that health is being, in a condition of where there is no disease. But that is not completely true. It is much more than it. The dictionary meaning of health is freedom from disease, sound body and mind. That condition in which function of body and mind are duly discharged. यानी कि वो कंडीशन जिसमें माइंड का और बॉडी का जो फंक्शन है सही तरह से तो वो ड्यूटी निभाई जाती है, राइट? सो वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का और माइंड का जो क्रिया है और एक्टिविटीज़ है वो ड्यूली डिस्चार्ज होता है. सो वी कैन से दैट हेल्थ इज़ अ कंडीशन where people is physically fit, got sound mind, right, and he is able to do all social activities also. So this way we can introduce what is good health. And health education pertains to all these things where we are concerned with physical, mental, social, spiritual health of a person, right? Hopefully it's clear to you. Now moving to the next, that is definition of health. We will do 2 or 3 definitions. First definition here is given of Siddhalingaya. He says health aims at making growth more perfect, life more vigorous, decay less rapid, and dealt more remote. इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ का जो एम है वो शारीरिक ग्रोथ जो होती है, विकास जो होती है वो परफेक्ट वे में हो और लाइफ काफ़ी विगरस हो, एनर्जेटिक हो, वो है. एंड डिके
जो है शरीर में, यानी कि शरीर का जो घटना है समय के साथ जो शरीर में जो बदलाव आते हैं, कमज़ोरियाँ आती हैं, वो बहुत कम स्पीड से हो एंड डील्थ मोर रिमोट। और जो और चीज़ें हैं जो रिमोट चीज़ें हैं या हमारे शरीर से जेनेटिक से रिलेटेड या बीमारियों से रिलेटेड है, वो उन सब चीज़ों से भी प्रॉपरली डील कर सके, तो वो गुड हेल्थ होता है, राइट। Let us move to the next definition. Next definition we will do from WHO, World Health Organization. Health is a dynamic state of complete physical, mental, social and spiritual well-being. Dynamic state यानी कि वो जो ऐसा state है जो चेंज होता रहता है, जिसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं, सोशल चेंज, स्पिरिचुअल चेंज आते हैं, और ये वेल-बीइंग के लिए होता है. सो हेल्थ इज़ dynamic state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. यानी कि इन सब की वेल-बीइंग है और सिर्फ एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मिटी या डिजीज़ नहीं है, बीमारियों की और इन्फॉर्मिटी की एब्सेंस नहीं, बल्कि इन सब की वेल-बीइंग है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग की. एक डेफिनेशन अब कर लेते हैं हम, लास्ट डेफिनेशन J.F. Williams की. Health is the quality of life that enables the individual to live most and serve best. यानी कि हेल्थ वो कंडीशन है हमारे ज़िंदगी की जिसमें हम अनेबल हो जाते हैं कि मोस्ट यानी कि बढ़िया तरीके, सबसे बेस्ट वे में जिए ज़िंदगी को, लिव मोस्ट, ये नहीं कि भी हम मरु से करते रहें, एंड सर्व बेस्ट, और सेवा भी बेस्ट तरीके से करें. जब आप हेल्थी होते हैं, जब आप फिज़िकली फिट होते हैं, मेंटली साउंड होते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ आप प्रॉपरली कर पाते हैं. ये वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है. आगे चलते हैं. अब है हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ हेल्थ. होप डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इसके लिए 3 डेफिनेशन हमने किया. काइंड्स ऑफ हेल्थ, हमारे पास 4 प्रकार की हेल्थ है. फिजिकल हेल्थ राइट, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है. इसके अलावा जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंट फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, बैलेंस डाइट, बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, स्किन कलर एक्स्ट्रा, ये फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. फिजिकली अनहेल्दी पर्सन इज़ नॉट ओनली अ बर्डन ऑन हिमसेल्फ बट ही शी इज़ बर्डन ऑन हिज फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन ऑल्सो. सो फिजिकली फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम देखते हैं आपके बायोलॉजिकल हेल्थ को, एनवायरमेंटल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को, एंड बैलेंस डाइट को. बॉडी वेट, हाइट वगैरह सब बैलेंस वे में होना चाहिए. और जो बंदा फिजिकली फिट होता है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बर्डन नहीं होता है. जो कि फिजिकली फिट नहीं होता वो बर्डन होता है. सच ए पर्सन कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. सो प्रॉपर development of physical health is very important. A person should pay special attention towards the following points in physical development and growth. That is, उसको क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए एनफ वाटर लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और अच्छी नींद लेना चाहिए. ये था हमारा फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ के बाद आ जाता है हमारा मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ क्या है? Mental health is related to mind's happiness, satisfaction and peace. Mind's happiness, satisfaction and peace. It means one is free from stress and tension. Mental health is related to mind's happiness, satisfaction and peace. It means one is free from stress and tension. Mental health के देखिए, stress free, right? दिमाग भी खुश है, सेटिस्फाइड हम, पीसफुल हैं, और स्ट्रेस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज सिचुएशन इन मॉडर्न एज, एवरी पीपल इज़ टेंस्ड. बच्चे से लेके बूढ़े तक सब टेंशन में है, और ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे और भी टेंशन बढ़ जाती है लोगों में. तो टेंशन, जो एंग्जाइटी है, ये हमारे प्रॉपर मेंटल हेल्थ को बैलेंस नहीं रहने देता है. तो स्ट्रेस को ले डाउन करना चाहिए, हटाना चाहिए. उसके लिए क्या होना चाहिए? राइट, हमें रिलैक्सिव एक्सरसाइज करना चाहिए. मेंटल हेल्थ को अच्छे करने के लिए हमें रिलैक्सिव और रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसके अलावा
हमारे जो गोल्स हैं, एम्स एंड लाइफ्स हैं हमारे, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। और हर किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मस्ट बी एक्सप्लोर्ड विद ओपन माइंड। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे लग जाओ, हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स को जानकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। देन पॉजिटिव आउटलुक हमेशा रखना चाहिए। जब हम कॉन्फ्लिक्ट से डील करते हैं तो पॉजिटिव आउटलुक। ओके, नेक्स्ट है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब क्या है? और आदमी क्या है? सोशल एनिमल है। मैन इज अ सोशल बीइंग। एवरी पर्सन स्ट्रगल टू हैव अ रेप्यूटेड पोजीशन इन सोसाइटी। हर कोई रेपुटेशन चाहता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहता है, और उसके लिए वो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स एंड रिलेशंस बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, आइडेंटिटी बनाता है, अपने एक्टिविटीज़ से, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से वो पहचान बनाता है। सोशल हेल्थ इस पे काफ़ी डिपेंड करता है। और अगर वो सोसाइटी में सही से नहीं रह सकता, इफ़ ही हैज़ नॉट गुड रिलेशन विद गुड पीपल इन सोसाइटी, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वन डू? इंट्रैक्शंस करनी चाहिए सोसाइटी में, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त हमें डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स को समझना चाहिए। नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए लोगों के साथ, एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनानी चाहिए। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। इससे क्या होता है? सोशल हेल्थ इम्प्रूव होता है, राइट। जब हमारे में स्किल्स नहीं होंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट वो नहीं होगी। हमें काफ़ी सारे स्किल्स सीखना चाहिए। हमें कैसे लोगों के साथ मिलनसार होना, ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेटेड टू हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हम जिसकी वजह से हमारी एक्सेप्टेंस होती है और हमारी रिजेक्शन होती है समाज में। तो स्पिरिचुअल हेल्थ से हमें अच्छा करने के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ टू इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, वी शुड डू योगा, meditation, etc., right? And such, and also certain physical exercise where you relax your mind. So this way you can we can be spiritually healthy also. So these were the 4 kinds of health: physical health, mental health, social health, and spiritual health. Hopefully this is clear to you. Now we will do objectives of health. किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ, और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? बेसिकली हेल्थ के साथ हम एजुकेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? नंबर 1 फिजिकल डेवलपमेंट, नंबर 2 मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, नंबर 4 इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज, नंबर 5 प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हेल्थ एंड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ हेल्थ। और सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने जो कुछ पैमाना रखा है वो है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन। फिजिकल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का? हमारा फिजिकल फिटनेस। अगर फिजिकली फिट हैं तो तभी हम बाकी चीज़ों के लिए योग्य हो पाएंगे। इफ़ वी आर फिजिकली फिट, राइट, एवरीथिंग विल बी बेटर। कहते हैं हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। सो जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं रहेगी हमारी, तो हम सोसाइटी के लिए भी वर्क नहीं कर पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू
work for the society also. So social development depends on physical development of the people living in the society. Then mental and emotional health. Mental and emotional health is essential, right? As sound mind and balanced emotioned person is very helpful in proper growth of society and himself also. अगर मेंटली साउंड नहीं है, इमोशनली ही हेल्दी नहीं है, तो अपने लिए भी खतरा है. अ मेंटली साउंड पर्सन कैन कीप कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस. सो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. देन डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ क्या है? बैड हैबिट्स को छोड़ना और अच्छे हैबिट्स को अपनाना, वो डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स है. गुड हेल्थ नहीं, गुड हैबिट्स है. तो गुड हैबिट्स फॉर्म की जाती है चाइल्डहुड से. सिंस चाइल्डहुड पीपल चिल्ड्रन आर एनकरेज टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स. उसमें सही से खाना, साफ सफाई, एक्सरसाइज, hygiene, everything is included. Even parents and teachers do motivate students to be hygienically proper and to eat proper diet, so on. Next objective is of health education is evaluation of physical deformities. हेल्थ एजुकेशन से फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ जो होती है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, तो इन सब को जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसको फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स है, डिफॉर्मिटीज़ है, उनको नोटिस किया जाता है और स्टेप्स आर टेकन सो दैट in such a way those children with deformities can be prepared that they may be able to handle those deformities properly and cure if it is possible, and can be able to help the society also, helping himself. So the child should be prepared to face obstacles likely to occur that is there in their life. So this way evaluation of physical deformities are done, and that is another objective of health education. Next is prevention of diseases. A child grows continuously, and if he grows, then the protection is required there, as during his growth and development, if he falls ill, there will be problem. His growth and development will be hampered. So it is very important that they should be protected from the diseases, and if they are protected from diseases, his mental and physical development will be normal, otherwise will cease to take place. Next point is to determine level of health. In every school, there is health related checkups regularly, and with that it is determined that in it they should include cleanliness, first aid, water, toilet, right, furniture management. All these things are there to provide the basic facilities so that the health level of students are maintained properly. Health educationists also support this, that the student should be given proper basic infrastructure, so that their health is not hampered. It means maintaining environment in the school, curiosity towards health education, telling about prevention of communicable diseases, and maintaining good atmosphere in this school. Home society is very important to determine the level of health. And the last one is about, according to Central Board of Secondary Education, CBSE, the health education is 2. क्या ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का CBSE के अकॉर्डिंग? वो है टू गेट रीड ऑफ डिजीजेस आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेशन.
सही से ऑब्जर्व करके जितने भी डिजीज़ है शरीर में उससे छुटकारा पा लेना। देन टू टेक इंटरेस्ट इन न्यू टेक्निक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जो नई टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करें ताकि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बच्चों की अच्छे से हो सके। देन टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज इन द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन थिंक अबाउट हेल्थ, ऐसा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए कि उसमें जो है थिंकिंग एबिलिटी हेल्थ को लेकर और बढ़े। देन टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स अबाउट सो देयर ओन एंड सोशल हेल्थ, about their health, physical health, social health, all kind of health. So this is objective according to CBSE. Hope objective of health education is clear to you. Let me tell you the main points. Its objective is physical development, mental and emotional development, development of good habits, development to work and evaluate the physical deformities, then to stop and prevent diseases. It includes in its objective then development of social responsibilities towards health, then to determine the level of health it also determines. Then we did central CBSE, Central Board of Secondary Education's objective about health. Those are to get rid of diseases after due observation, to take interest in new techniques of physical development, and to develop scientific knowledge in students so that they can think about health, and to provide knowledge to the students about their own and health, about their social well-being and about their social health. So these were the objectives of health education. Now the principles of health education. What are the principles of health education? First principle is balanced diet. What does it mean? Balanced diet means good food, nutritious food we should take and we should avoid fast food. Then personal health. Students must be given knowledge about personal health and hygiene, right? It includes good food, daily bath, wearing good clothes, means clean clothes, and sitting and sleeping in proper postures. So that is personal health. Then and that is another principle of health. Then is regular medical checkup is also part of principle of health. It includes a health checkup, vaccination, right, to prevent future ailments. Then cooperation from society and family is also another principle of health, and that is if society and family doesn't cooperate, then we won't be able to keep our environment neat and clean. Or so it is very important that society cooperate, people cooperate, family cooperates. Physical exercise is another principle. If you want to have good health, then daily regular physical exercise is very important. Now move to good habits. Another principle of good health is good habits. Good habits means what are good habits? Cleanliness, health related habit, avoid bad ones, right? Too much sleeping, be laziness, throwing things here and there, right? Spitting in public, not obeying traffic rules, not obeying teachers and parents, right? And remain dirty. So those are bad things. So good habits should be opposite to it: clean, hygiene, using dustbins, obeying rules, right? So these are the principles of health. I again repeat, the main principles of health are balanced diet, personal health, regular medical checkup, cooperation from society and family, physical exercise, good habits. Now health related measures. Measures क्या होते हैं? Measures are उपाय, जिसको हम उपाय कहते हैं. Health related measures. क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए हेल्थ के लिए? Many programs pertaining to child's health must include. जो भी प्रोग्राम है उनमें क्या शामिल होना चाहिए? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ. और कुछ मेजर्स जो हमें अपनाने चाहिए वो इस प्रकार है: हेल्दी एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, घर में, स्कूल में, बाहर में, राइट? बच्चों को ये एनवायरनमेंट मिलना चाहिए.
जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहिए, राइट, और अपने घर के आसपास में, अपने रास्तों में, स्कूल में, तो इससे हेल्थी एनवायरनमेंट बना रहेगा, साफ़ सुथरा, अपने आले दुआले को रखे, आसपास को, नेबरहुड को साफ़ सुथरा रखे। देन नेक्स्ट इज़ प्योर एयर, वाटर एंड लाइट। अगला जो मेजर्स है, उपाय जो हम अच्छे हेल्थ के लिए कर सकते हैं, वो है हमें प्योर एयर, वाटर एंड लाइट मिले। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स में, घरों में भी ये सारी फैसिलिटीज़ ये हो, प्योर एयर की, वाटर की, और साफ़ पानी की और लाइट की। क्योंकि अगर इम्प्योर वाटर और इम्प्योर एयर होगा तो, और प्रॉपर लाइट नहीं होगी, तो इलनेस होगी। तो ये मेजर्स अपनाने चाहिए। देन मेडिकल चेकअप, रेगुलर मेडिकल चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मेडिकल चेकअप ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी डन इन स्कूल, और एंड द रिकॉर्ड शुड बी केप्ट, right, also should be maintained with time seeking knowledge about the well-being and the condition of the student. If any student is affected by any disease, his medical treatment should be done by a good doctor. Otherwise, if it is contagious, it would affect others also. Otherwise, it will affect the student, right, and his education also. So proper medical checkup should be there. Then proper furniture facilities should be there for the students, so that their sitting postures, their studying posture is good. Then balanced diet is another measures, and one of the most important measures, right. If students get rich and nutritious food, it promotes their health. If they don't have proper nutritious food, then health will degrade, right, and it will affect their growth and development, all kind of growth and development. Then yoga and exercise. Yoga should be made to perform for good health, right. It also extract your impurities, internal as well as external. Pranayams, niti kriyas, right, are very helpful to pure you from inside. So this way we see that health related measures should be adopted in schools and health in society also. Those health related measures are healthy environment, pure air, water, light, medical checkup, proper furniture, balanced diet, and yoga. Now, scope of health education. What is the scope of health education? In it we include, first is about knowledge about your anatomy and your physiology, about your muscles, skeleton system, your organs, body system, right. It should, knowledge of these should be given to the students, so that they can keep their body healthy and disease free. The next scope that is included, next thing that is included in the scope of health education is health related instructions. Health related instructions should be given regularly to maintain health and standard, right. Some rules and regulations about health should be there, and good habits related instructions should also be given, so that they may keep themselves healthy. And along with that, they should be given instruction about the hygiene, the environment, the balanced diet and exercise also, and it is included in the scope of physical education. Next point is health services. Basic health services should be available, right, everywhere, right. So in case of ailment, doctors can be consulted, and children should be saved from kind of big problems. So it should be consulted at the various stages, but it should be consulted as early as possible. And health of any schools, children, or society, or the country depends on the services that is given there by the health services department and by the government, local government or central government, whoever provided, right. So it should be there. Then hygienic environment is one another scope of health education. In hygienic environment, we include cleanliness, growing of trees, physical cleanliness, clothes cleanliness,
homes and schools and surroundings cleanliness, right? We should keep our surroundings clean, we should plant more trees, etc. So these are included in the health related scope, and means scope of health education. So these things I will again revise. These are basic knowledge of anatomy and physiology. That is number one scope of health education. Number two is health related instruction. Number three is health services, and number four is hygienic environment. And this way the chapter gets over. Hopefully it is clear to you, right? So this is the video on chapters. Now I'll be making another video on questions from the first chapter. So here goodbye, and see you in the next video that would be on question answer. Till then, take care, bye bye.